today's lecture will be on the gross anatomy of the spleen, and along with the discussion on gross structure, we will discuss the histological histological points regarding this structure, right? Let's start with the gross anatomy first. That spleen, how does it look like, right? When we look at it grossly, means when we look at it with the naked eye, we can appreciate it as a reddish organ, which is the largest, which is considered as the largest lymphoid organ of the body, right? It is normally oval in shape, and the anterior border is a little bit notched. Here in the picture we can see that the anterior border, this is the anterior border, and it is notched, right? As far as the location of the spleen is concerned, see here we can see the anterior border very nicely. This is the notched anterior border, right? I hope it's clear now. Okay. When we talk about its location, it lies just beneath the left half of the diaphragm, right? Diaphragm, it's the structure which divides the thoracic cavity from the abdominal cavity, right? ये diaphragm है, उसके left dome के नीचे posteriorly we can find spleen close to the 9th, 10th and 11th rib. ठीक है? This is how it lies beneath the 9th, 10th and 11th rib, and when we see at the long axis of the spleen, it is lying along the shaft of 10th rib. मीन्स इसका लॉन्ग एक्सिस स्प्लीन का ये मेनली किसके साथ किस लेवल पे होगा? दैट इज़ एट द लेवल ऑफ द शाफ्ट ऑफ 10th rib, राइट? तो मेनली जो स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन होगा दैट इज़ अंडरलाइंग द 10th rib, एक्सटेंट उसका 9th to 11th, राइट? The lower pole of the spleen, it extends forwards only as far as the mid-axillary line. ठीक है? Now see, the patient is in the supine position. ठीक है? ये हमारे पास axilla है. This is the anterior thoracic and abdominal region. ये posterior है, back पे है. ठीक है? ये हमारा spleen है, which is lying in the posterior part of the abdominal cavity, right? From the axilla we draw the imaginary line. Middle of the axilla ये हो जाएगी mid axillary line, आगे वाली हो जाएगी anterior axillary line, right? नॉर्मल स्प्लीन की पोजीशन ऐसी होती है. और अभी हमने पढ़ा द अपर पोल एंड द लोअर पोल. इसका लोअर पोल, ये स्प्लीन इस तरह से टिल्टेड होती है कि लोअर पोल आगे की तरफ आ रहा होता है, बट इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दी मिड एक्सिलरी लाइन. ठीक है? मिड एक्सिलरी अगर ये पहुंचेगा भी तो अप टू मिड एक्सिलरी लाइन ही पहुंच सकता है, अदरवाइज ये उससे भी पीछे ही रहता है, राइट? एंड दिस इज़ द रीज़न वाई the spleen of normal size cannot be palpated on clinical examination, right? When the spleen is enlarged, then only it is palpated on clinical examination. As other organs, spleen is also covered by the peritoneal layer, right? Now when the peritoneal layer it condenses around the structures, any structure, it transforms into ligaments. So the peritoneum related to spleen transforms into two main ligaments. The gastrosplenic ligament is one of them. Gastrosplenic omentum or ligament, it's one and the same thing, so no need to take tension about it. Gastrosplenic means, gastro means from stomach to spleen, right? अब देखते हैं लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. इट पासिस फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन. हाइलम हम अक्सर बात करते हैं, हाइलम ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली द गेट वे ऑफ दैट स्ट्रक्चर, जहाँ से वेसल्स आना और जाना करेंगे, राइट? सो लाइकवाइज स्प्लीन का भी ये इंडेंटेड पोर्शन है विच इज़ नोन एज हाइलम. हाइलम से ग्रेटर ओमेंटम ऑफ स्टमक तक, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक जो हमारे पास लिगामेंट जाएगा, दैट इज़ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, राइट?
In the gastrosplenic ligament, we can see short gastric arteries and left gastroepiploic arteries, right? This is important, can be asked in BCQs. The contents of gastrosplenic ligament ornament, right? The next main ligament is the splenico-renal या लीनो-renal. ठीक है, दोनों नाम इसके. Splenico-renal means स्प्लीन से किडनी तक जा रहा है. The other name for this is लीनो-renal. Leinor लीनो-renal. सही है. स्प्लीन का लीन वर्ड लिया हुआ है, लीनो-renal ligament. इसमें क्या है, the peritoneum passes to the left kidney because spleen is lying on the left side of the body. So from the spleen going towards the kidney, right? So this is the लीनो-renal or splenico-renal ligament, right? Spleno-renal ligament, splenico-renal ligament or लीनो-renal ligament, it's one and the same thing. Within this ligament we can see splenic vessels and tail of pancreas. ये developing pancreas है adult में. ये tail यहाँ तक आके इस ligament के अंदर इसका tail reside करता है, right? So this is again important कि लीनो-renal ligament के contents क्या हैं. Now there are few other ligaments as well other than gastrosplenic and splenorenal. We can see splenocolic. Splenocolic means spleen से colon तक जाएगा. Here spleen, this is spleen, spleen से this is the colon, ये splenocolic, right? Splenophrenic, spleen से ऊपर diaphragm पे जाएगा, splenophrenic, right? And pancreatico-splenic, पैंक्रियास से स्प्लीन तक जाएगा, जो हमें यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा. पेंक्रियाटिको-कोलिक दिख रहा है, ठीक है. तो पेंक्रियाटिको-स्प्लीनिक भी होता है जो स्प्लीन से पैंक्रियास तक जा रहा होता है, राइट. बट द मेन टू आर गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड स्प्लीनोरेनल और लीनोरेनल, राइट. So these two are very important ligaments um, along with the contents, right? And the लीनो-renal, the spelling is L-I-E-N-O-R-E-N-A-L, right? Now when we talk about the relations of spleen, anteriorly we can see the stomach. Along with the stomach we can see the tail of pancreas and left colic fracture, right? One second later. Yeah. Okay. So we can see in front is the stomach, right? We can see the tail of pancreas. This is the tail of pancreas. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोलॉन होगा तो लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर जिसके साथ इसका ऊपर हमने देखा था हेयर, ठीक है. दिस इज़ द लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर. ये सब इसके एंटीरियर रिलेशंस में आएंगे. कोलिक फ्रैक्चर वैसे इसके इंफीरियर रिलेशन में आता है, ठीक है. एंटीरियरली हम मेनली लेंगे स्टमक को, टेल ऑफ पैंक्रियास को, राइट. मीडियली हमारे पास होती है लेफ्ट किडनी. आई विल शो यू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. वेट. Okay, posteriorly we can see the diaphragm, left pleura, the left diaphragmatic recess along with the left lung and 9th, 10th and 11th ribs here. Okay, here we can see the left pleura of the diaphragm. Posteriorly हमारे पास 9th, 10th and 11th यहाँ पे rib नहीं दिख रही, ribs होती हैं posteriorly, right? Here this is what I was talking about. Inferiorly हमें left colic fracture मिलेगा, ठीक है. And medially we have the left kidney. This is the left kidney. Anteriorly stomach, tail of pancreas. Medially left kidney. Inferiorly left colic fracture and posteriorly diaphragm आ रहा होगा, ठीक है. ऊपर से pleura and lung आ रहे होंगे and 9th, 10th, 11th ribs are, ठीक है. This slide is the composite slide for relations. सही है. एक इसी slide को आप कर लोगे तो that's enough.
When we talk about the functions of spleen, it is helpful in filtration of blood, it is helpful for the activation of lymphocytes, and yes, it is helpful for the destruction of old or damaged RBCs, right? The arterial supply is via splenic artery, which is the main artery of spleen. It is a branch from celiac trunk. It has a tortuous course as it runs along the upper border of the pancreas, right? Here in the picture we can see that it is arising from the celiac trunk, running along the upper border of pancreas and supplying the main structure of the spleen. The venous drainage is via splenic vein. The splenic veins, they leave the hilum and runs behind the tail and the body of pancreas. After crossing this course, at the level of neck of pancreas, the splenic vein joins the superior mesenteric vein and form the portal vein. This is important, right? हाइलम से स्प्लीनिक वेन निकलेगी, उसका ब्लड ड्रेन करके, वीनस ब्लड लेके, वहाँ से स्प्लीनिक वेन विल रन बिहाइंड द टेल एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियास, और नेक रीजन पे आके, यहाँ पे इमेजिनरी समझो, यह पैंक्रियास का रीजन है, राइट? हाइलम से आई, ये टेल एंड बॉडी के पीछे रन करती हुई नेक वाले रीजन में, दिस इज़ द रीजन ऑफ नेक ऑफ पैंक्रियास, यहाँ पे इट इज़ यूनाइटिंग विद सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन फॉर्मिंग द पोर्टल वेन. The lymphatic drainage is ultimately into the celiac group of nodes, ठीक है, but it is traveling via a group of few nodes in the course. These nodes are known as pancreatico-splenic nodes, जो कि पूरे कोर्स ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी में होंगे, राइट? ये पूरा वे ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी है, तो इसी रूट पे पूरे हमें ग्रुप ऑफ छोटे छोटे नोड्स मिलेंगे, दैट आर pancreatico-splenic nodes, and these pancreatico-splenic nodes, they will ultimately drain into the celiac group of nodes, right? The red ones are the celiac nodes. The nerve supply is via celiac plexus, which is accompanying the whole course of splenic artery. Now we'll talk about the histological features of spleen. When we look at the structure, we can see that it is a capsulated structure, right? Whenever we talk about any capsule of any structure, this capsule is made up of dense irregular connective tissue, right? And this capsule, it sends the extensions inwards into the stroma. These inward extensions are known as trabeculae, right? Now, what's the importance of trabeculae? These trabeculae, they divide the stroma into the compartments, incomplete compartments, right? The spaces between the trabeculae is occupied by the sponge-like material, जिसको हम नाम दे देंगे splenic pulp, right? जो स्ट्रोमा होगा उसमें ये हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कैप्सूल है, उसके अंदर की तरफ इसकी स्ट्रैंड्स जा रहे हैं जो ट्रैबेक्युली बन गए. ट्रैबेक्युली ने अंदर वाला जो मैटर था उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो मैटर को हम क्या कह रहे हैं, वो है स्प्लीनिक पल्प. पल्प को हम दो तरह से अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश रेड पल्प एंड वी कैन सी द वाइट पल्प, राइट? The red pulp is found between the sinusoids. It has the cell cords known as Billroth's cords, या cords of Billroth, with mainly macrophages, reticular fibers, and reticular epithelial cells. Right? Means the sinusoids, the cords, and the macrophages, reticular fibers, all the contents are related to red pulp. Right? The white pulp is mainly involved with the lymphoid
कंटेंट ऑफ द स्प्लीन, तो सारा जो लिम्फोइड टिश्यू होगा वो हमारा वाइट पल्प में होगा. देन वी कैन सी द मार्जिनल जोन. मार्जिनल जोन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन द रेड एंड वाइट पल्प. demarcation zone होगा of the red and white pulp, and in this zone we can see the lymphocytes. They are leaving the blood to enter the white pulp, and RBCs, they are entering the red pulp. Means इस वाली जगह पे आके, मार्जिनल जोन पे आके, cells will decide in which region to enter, right? जो lymphatic, ये lymphoid से related cells हैं, lymphocytes and all, they will enter the white pulp region. और जो red pulp के cells हैं, red blood cells, रेटिकुलर सेल्स एंड ऑल, वो रेड पल्प की तरफ चले जाएंगे. ठीक है. So this is how the red and white pulp can be appreciated, but we can see that white pulp is stained darker as compared to the red pulp because the lymphoid tissue, it gets stained darker, right? तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो white pulp doesn't mean the lighter one, right? This lymphoid tissue, it stains darker purplish, तो this is the white pulp जो हमें lymphoid tissue दिख रहा है, and this is the red pulp, the lightest one, right? अब red pulp के अंदर हमें splenic cords, splenic sinusoids, अभी आगे अच्छी पिक्चर है उसमें I'll show you that. So the white pulp is the immune component of spleen, right? The cell components of white pulp are similar to those of the lymph node, except that the antigens enter the spleen from blood rather than lymphatic. This is the only difference, right? इसमें जो हमारे पास antigens आ रहे हैं वो हमारे पास blood के through enter होंगे, ना कि through lymphatic fluid. Lymph node में through lymphatic fluid आ रहे होते हैं, right? And then the immune response starts. ठीक है. रेड पल्प को जब हम देखेंगे, इसमें वी कैन सी द स्प्लेनिक साइनसेस एंड स्प्लेनिक कॉर्ड्स, राइट? साइनसेस आर लाइंड बाय, सी दीज आर द साइनसेस. साइनसेस आर लाइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स होंगे. अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी द रेटिकुलर फाइबर्स. These are the reticular fibers. The function of reticular fibers are always that it provides the structural support, right? So the splenic cords, they form the network around the outside of the sinuses. ये हमारे पास splenic cords हैं, ये sinuses हैं, ये हमारे पास splenic cords हैं. splenic cords में हमारे पास होंगे erythrocytes, macrophages, plasma cells, lymphocytes. मीन्स हमारे ब्लड में जो जो डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं वो सारे हमारे पास स्प्लेनिक कॉर्ड्स में होंगे, राइट? सो द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स वो हमें स्प्लेनिक कॉर्ड्स एंड साइनोसाइड्स दोनों में मिलेगा. ठीक है. सो द रेड पल्प is related to the blood content, the white pulp is related to the lymphoid content. This is important. ठीक है. Now the splenic artery, it enters the hilum, giving rise to trabecular arteries which are distributed to the splenic pulp along the connective tissue trabeculae. Now hold on here, let's revise trabeculae क्या थे. ट्रेबिक्यूली वो थे जो कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल अपने अंदर स्ट्रैंड्स जो है स्ट्रोमा के अंदर थ्रो कर रहा था, राइट? अब वो पूरा क्या कर रहे हैं, अंदर स्ट्रोमा को डिवाइड कर दिया उसने कंपार्टमेंट्स में. ठीक है. अब आ जाओ, हाइलम क्या था? हाइलम था एक इंडेंटेड कॉर्नर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन जहाँ से वेसल्स आना और जाना करेंगे. आना कौन करेगा? द आर्टरी. ऑब्वियसली वो आएगी, एंटर होगी, सप्लाई करेगी. जाना कौन करेगा? द वेन, जो इसका वीनस ब्लड ड्रेन करके बाहर ले जाए. ठीक है. अब स्प्लेनिक आर्टरी विच इज़ द सप्लाई ऑफ स्प्लीन, इट विल एंटर थ्रू द हाइलम, राइट? हाइलम के बाद, क्योंकि अभी हमने बात की कि ये ट्रेबिकुलर आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, तो ट्रेबिकुलर आर्टरीज, द नेम्स आर सजेस्टिंग द पोजिशन, राइट? ट्रेबिकुलर नाम ही इसलिए गया है क्योंकि ये ट्रेबिकुली में एंटर हो जाएंगे.
ठीक है, they are distributed along the trabeculae, right? Now when they leave the trabecula, when they leave the trabecula, it becomes invested by a sheath of T cells. T cells are lymphoid cells, right? T cells forming a periarteriolar lymphatic tissue, जिसको हम PALS कहते हैं, और PALS. These are periarteriolar lymphoid sheaths that are actually investing the artery when it is leaving the trabecula. Now hold on here, I'll show you the picture first. See, hilum के अंदर enter हुई splenic artery which is not shown here. Then splenic artery will give a branch known as trabecular artery which will travel within the trabecula. ये एक trabecular दिख रहा है, ये हमें दूसरा trabecular दिख रहा है, ठीक है. जो बाहर कैप्सूल, यहाँ बाहर कैप्सूल होगा, वहाँ से ये अंदर उसकी इनवर्ट एक्सटेंशंस आएंगे, राइट. और हाइलम यहाँ होगा, ठीक है. हाइलम से एंटर हुई, उसने मेन आर्टरी ने अपनी ब्रांचेस ट्रेबिकुला में एंटर होने के लिए दे दी, ट्रेबिकुलर आर्टरीज में, ठीक है. नाउ द ट्रेबिकुलर आर्टरीज, उन्होंने कहा कि जब इट विल लीव द ट्रेबिकुला, वो अपने ऊपर एक टी सेल की शीथ लेके निकलेगा. ये हमारे पास ब्लू लेयर है, इट इज़ शोइंग द sheath of T cells known as periarteriolar lymphoid sheath, जिसको हम PALS कहते हैं, ठीक है. When it has left the trabecula, now this branch is being invested by T cells, ठीक है. PALS से ये एनशीथित होंगे. इसको अब हम नाम दे देंगे सेंट्रल आर्टरी. मेन स्प्लेनिक आर्टरी traveling into the trabecula, नाम हो गया trabecular artery. When the trabecular artery is leaving the trabecula, the name is central artery, ठीक है. This central artery is being invested by PALS, right. Now come back to this point. Now this periarteriolar lymphoid sheathed artery, it will penetrate the lymphatic nodule, और lymphatic nodule कहाँ होगा, white पर, ठीक है. अब ये टी सेल से शीटेड जो सेंट्रल आर्टरी है, ये एक लिम्फेटिक नोड्यूल में एंटर हो जाएगी. एंड वी एज वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑल द लिम्फोइड कंटेंट इज बेसिकली वेयर इन द वाइट पल्प, ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि वाइट पल्प में अब ये एंटर हो जाएगी, राइट. The blood vessel is designated as central artery. This we have discussed. Now the central artery will leave the white pulp to become the penicillar artery. अब जब उसने white pulp को लीव कर दिया, this white pulp से जब वो निकल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा penicillar artery, ठीक है. This is the penicillar artery. So the main is splenic artery entering into the trabecula. The name is trabecular artery. While leaving the trabecula, the name is the central artery. But the central artery is found to be invested by T cells. This is known as PALS, periarteriolar lymphoid sheath. Now this central artery along with PALS will enter into the white pulp, the lymphatic nodule, and when it will leave the white pulp, the name will be the penicillar artery, right. The penicillar arteries, they end as macrophage sheathed capillaries. Now this is the fate of splenic artery. This is how it ends. इसके end में ये एक हमारे पास macrophages sheathed end capillaries बन जाएंगे. So this is the course: splenic artery, the trabecular artery, central artery, penicillar artery, and after penicillar artery, macrophage sheathed capillaries. So this is how we can see the structure of spleen. This is the red pulp. The red color is due to the presence of blood cells, and this is the white pulp. The darker coloration is due to the presence of lymphoid tissue. We can see the lymphoid nodules over here, right. This is the H&E stained picture. We can see the darker stained region, which is the white pulp, along with the lymphatic nodules. And this is the lighter stained zone. This is the red pulp. It stains always lighter in H&E staining as compared to white pulp, right? And this white is the marginal zone. ये marginal zone हमें दिख रहा है.
The marginal zone is actually the demarcation, or you can say the border between the red and white pulp, right? So this was all for today. We discussed the whole gross anatomy and histological features of spleen. For the gross anatomy, you need to know the ligaments, the relations, and sorry, and the neurovasculature. Blood supply is important. In the histology, you must need to know the difference of white and red pulp. What are cords of Billroth's, ठीक है, वो कौन से पल्प में मिलेंगे, रेड में मिलेंगे, वाइट में मिलेंगे, लिम्फॉइड कंटेंट कौन से पल्प में होता है, द आर्टरीज का फेट जो अभी हमने किया, स्प्लेनिक आर्टरी है, ट्रेबिकुलर हुई, एंड देन द सेंट्रल आर्टरी, फिर पेनिसिलर बनी, राइट. व्हाट आर पेल्स, PALS, दैट इज पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ. ये कौन सी किस ब्रांच ऑफ आर्टरी पे वो एनवेलप करती है, किस ब्रांच को कब करती है, जब ट्रेबिकुलर आर्टरी ट्रेबिकुलर से बाहर निकलती है और सेंट्रल आर्टरी बन जाती है, राइट. एंड the reason that why the white pulp it stains darker than the red pulp under H&E stain, right. So that's all for today. Inshallah we'll meet in another lecture. Till then, Allah Hafiz.